नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। जमशेदपुर टाटा स्टील के एमडी टीबी नरेंद्रन ने नए साल के केक कटिंग सेंटर फॉर एक्सीलेंस में किया। इस दौरान उन्होंने शहरवासियों को दिया शुभकामनाएं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। Vice President Corporate Services. Dr. Arun Sharma, Chanakya, Mr. Sanjeev, by talking about safety. And I think today is actually a good day for us to think about safety in Jamshedpur. I don't know how many of you are aware, our media friends would be aware. There was a bad accident on the road this morning, and I don't know how many people lost their lives, but I understand 5 or 6 people, kids, lost their life. Huh? Six youth lost their life. Right? They were in one car and it had an accident. Now, so it's not a happy new year for those families. Right? So, and I think, what happens in Tata Steel, and obviously it happens in our daily lives, we take a lot of risks without realizing that we are taking the risk, or even if we are realizing we take the risk, we think accidents only happen to other people. Right? So simple thing like wearing a seat belt. So many times I've got into a car where they'll say back seat में seat belt पहनने का जरूरत नहीं है या कोई पकड़ेंगे नहीं. It is not about somebody catching me. It is my life. So it's not about whether I get caught. नियम है या नहीं. If it is safe for me to wear a seat belt, I should wear a seat belt. Similarly, helmet. ये नहीं कि पकड़ा जाएगा या नहीं. It is your life, your family. Right? So I think it's important to constantly remind ourselves that we are taking risks. We will bear the consequences, or our family will bear the consequences. There are so many famous people who died in car accidents. I don't want to name them. But if you look at the accidents, they have not worn seatbelts. So it doesn't matter whether you're famous, you're important, you're as vulnerable as somebody who is not important or not famous, right? So I think it is a great thing to remind yourself. And I would urge all of you and our friends who are on two-wheelers to at least wear helmets, our friends who are on four-wheelers, please wear a seatbelt, whether you're in the front seat or the back seat. And many fatalities have happened to people in the back seat. Because the assumption is back seat, you don't need to wear a seatbelt. And people in the front seat have survived, but people in the back seat have not survived in the accident. In Tata Steel, because we insist on seatbelts, we've had many bad accidents where people are driving long distances, but nothing has happened to anyone because all were wearing seatbelts. Even recently, 4 of my senior colleagues were driving from Calcutta. They had a bad accident. Luckily, nothing, the car was smashed, but nothing happened to any of them, right? Because they were wearing seatbelts. So this is what I wanted to start with, because I think it's important to get this message across as we express condolences to the family. As far as 2023 is concerned, it has been a challenging year globally. It has been a good year for India. I think the Indian recovery was continued. Post-COVID, we recovered well. And I think even in the last year, we've done well. I think the RBI handled the macroeconomic situation well, managed inflation well. The government has managed the economy well because of the investments that have been made. And overall, I think there was a lot of positivity about the prospects of India. I think rural India has taken some time to recover post-COVID. It's still in recovery mode, but I think overall, India growing at 7% is a great achievement in these difficult times. Globally, things have been challenging. Even in China, the recovery has not happened as was expected last year this time. And so as a consequence, if I look at the steel industry, you see China exporting almost 8 million tons a month, which is the highest they've exported since 2015. And that has an impact on international prices, and that has an impact on the profitability overall of the steel industry globally. In India, the continued focus on infrastructure means that demand for steel has grown. The steel demand this year has grown about 10-12%, which is good and which is the way it should be. Normally in developing countries, the demand for steel grows at a rate higher than the GDP growth rate because it's oftentimes investment-led growth. In India, it has not been like that for most of the last few decades, but I'm happy to see now that because of the government focus on infrastructure, the steel consumption is growing at 10-12% a year.
which means India is going adding about 10 to 12 million tons of demand every year, and which means Tata Steel has to add 1 to 2 million tons of capacity every year if it has to just retain its market share. And that's what we are doing. During the year, we started commissioning many of our facilities in Kalinganagar, and in 2024, the balance facilities will also be commissioned. So that will take the capacity in Kalinganagar from 3 million to 8 million tons. The Bhushan plant is running full out at 5.1 million tons. The Nilachal plant that we acquired last year, which was closed for almost 3 years, within 12 months, we've got it running at full capacity. So that's producing about 1 million tons. And of course, we continue to plan for expansion in Kalinganagar beyond 8 million ton, and in Angul beyond 5 million ton, and in Nilachal beyond the 1 million ton. So a lot of growth will happen for Tata Steel in India at these sites. As far as Jamshedpur is concerned, the focus is more on downstream because the steel plant itself, there's limited opportunity to expand because we are already using the 1700, 1800 acres that we have very well by producing 11 million tons. But now the focus is on downstream. We are setting up a rolling mill in what was in the ISWP Gemco area. We are, of course, expanding and doubling capacity in tin plate. And we will also continue to invest in Gamaria to grow the business there. And the other downstream facilities will also continue to grow. So I think about value-added growth, also continue to make the process cleaner, greener, because we are conscious that we are a steel plant in the middle of a city, and hence there is a greater obligation on us to make sure that we are clean and green and cleaner and greener as we go along. Yeah, talked about, we continue to invest to improve the quality of life here. But as Chanakya also said, I would urge, while Tata Steel will do what it has to do, I would urge all the citizens to also and do what you can, because no change can be driven all of us own it, whether it's sustainability, whether it is greening the city or cleaning the city. I think all of us can have a role to play, have an influence. We should do what we can. Tata Steel will help you do it. I'm also happy that there is some progress being made now on the whole subject of industrial township. I think it's important for a city as big as this to have some valid legal status. I think we've been living in a bit of vagueness for the last couple of decades or more. So I'm glad that there is clarity now, and so between the government and us, we can move forward on this. And also thank you all for your support. I know this has been a long journey where many of you have played a role in helping us come to a conclusion, because I think what is important for Tata Steel is that together with the citizens of Jamshedpur, we can make it one of the cities that most people would aspire to come and live in because of the quality of life here. So thank you very much once again, and wish you all the very best for a wonderful 2024. Thank you. For your kind presence at Center for Excellence and addressing the citizens of Jamshedpur. On behalf of Mr. TV Narendran proceeds to address the media. I would like to invite 24 की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको. इम्पोर्टेंट चीज़ वो है सबके लिए. और जहाँ तक इंडस्ट्रियल टाउनशिप का सवाल है, जैसे मिस्टर नरेंद्र ने अभी कहा कि ये कुछ आई थिंक 20-30 साल से ये मामला चल रहा था कि क्या सही रहेगा जमशेदपुर के लिए, और चाहे वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो या इंडस्ट्रियल टाउनशिप हो, ये दोनों हमारे लीगल फ्रेमवर्क में दे रखा है. और अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हुआ था इंडस्ट्रियल टाउनशिप का, वो उस पर्सपेक्टिव से हुआ था कि हमारे देश में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहाँ पे इंडस्ट्री टाउनशिप चलाती है. सिर्फ जमशेदपुर ही नहीं है, चाहे वो बाकी स्टील प्लांट के टाउन्स हैं, या आप कुछ BHEL के टाउनशिप्स देखिए या ONGC के टाउनशिप्स देखिए, तो उसी के लिए ये प्रावधान लाया गया था. और ये आज के नहीं, ये तो 90s में आया है. तो इसलिए ये एक साल भर साल डिस्कशन चल रहा था. आप तो यहाँ पे कुछ लोग हैं तो वो जानते होंगे कि जब अनडिवाइडेड बिहार था तो उस टाइम पे भी गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने ये कहा था कि हम लोग इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाएंगे बोकारो और जमशेदपुर को. उसके बाद स्टेट का बाइफर्केशन हुआ और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के साथ जब डिस्कशंस हुई, क्योंकि ये बहुत डिस्कशंस और कंसल्टेशंस के बाद ही आगे मामला बढ़ा है. और लास्ट कॉन्वर्सेशन डिस्कशन यहाँ जमशेदपुर में भी 2014-15 में एक बार हुआ. आई थिंक DC ने एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें सब लोग पार्टिसिपेट भी किए थे.
और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने भी कहा कि हम इसको इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाना चाहते हैं। उसके बाद से ये पेंडिंग रहा है और अभी खुशी की बात है कि गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने डिसीजन लिया, कैबिनेट अप्रूवल्स हुए, नोटिफिकेशंस हो रहे हैं और आगे बढ़ रहा है मामला। तो ये एक कंक्लूसिव डिसीजन की तरफ जा रहा है। आई मीन जो आपका जो क्वेश्चन था विद रिगार्ड टू म्यूनिसिपल सर्विसेज, तो वो तो आज के दिन भी हमारे लीज एग्रीमेंट के हिसाब से हमको सर्विस प्रोवाइड करनी है, हम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हेल्थ सर्विसेज, तो हेल्थ सर्विसेज आज भी प्रोवाइड हो रही हैं, होपफुली बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करते रहेंगे। जहाँ तक सब्सिडी का सवाल है, आप कंपेयर कर लें इस सिटी के साइज़ से और इस फैसिलिटी से, कहीं पे भी मेडिकल सर्विसेज जहाँ दी जाती है, जमशेदपुर इज स्टिल द चीपर वन। मैं इससे पहले दिल्ली में था, आपसे मेरी बात हुई है इसके बारे में। या आप साइज़ के हिसाब से भी करेंगे तो अच्छी सर्विसेज के लिए जो भी रेट्स चार्ज होते हैं उससे कम ही हमारे जमशेदपुर के रेट्स हैं। और बाकी सब रेगुलेटेड सर्विसेज हैं, चाहे बिजली है या पानी है, वो रेगुलेटेड रहता है। उसमें आई थिंक रितु कैन प्रोवाइड मोर क्लैरिटी, बट आई थिंक idea is to have better and better quality of life for all of us, including me and you, and I think we need to play that role as a company, as individuals, and I would request all of you from the media also to play that role in a positive manner so that we all live, जैसे कहते हैं फेरी टेल में, हैप्पीली हेयर आफ्टर। तो नरेंद्र साहब, ये जो इंडस्ट्रियल टाउन, पहले तो लीगल स्टेटस ही नहीं था। क्या था, जैसे चाणक्य जी ने बोला, म्यूनसिपैलिटी भी नहीं है, इंडस्ट्रियल टाउनशिप भी नहीं है, तो लीगल स्टेटस क्या है वो तो ये केवल पेपर वर्क है या इससे कुछ क्लियर नहीं था। तो हम लोग कुछ नहीं किया 20 साल से, हम लोग इन्वेस्ट करते रह रहे हैं। आप लोग में से कोई भी शहर आप जाके देखिए तो आप बोलेगा कि इधर का फैसिलिटी जो है इज कंपेरेबल टू एनीवेयर इन इंडिया। ठीक है, तो अभी वो तो हम करते रहेंगे। एक बात भी मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एक स्टील प्लांट चलाने के लिए एक शहर चलाने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग कर रहे हैं क्योंकि इट इज़ आवर लेगेसी। इधर हम लोग का शुरुआत हुआ, दिस इज़ नेम्ड आफ्टर अ फाउंडर। क्योंकि आप देखिए कलिंगानगर या अंगुल में हम लोग शहर नहीं चला रहे हैं, उधर प्लांट चला रहे हैं और गवर्नमेंट शहर चला रहे हैं। इधर में हम लोग का एक इट इज़ अ वी फील बोथ विल बेनिफिट, कम्युनिटी विल बेनिफिट, हम लोग को भी दे विल बी अ बेनिफिट बिकॉज हमारा स्टील प्लांट शहर के बीच में है। तो शहर में थोड़ा वी शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ क्या बोलते हैं, कंट्रोल या सम स्टेबिलिटी इन द सिटी, क्योंकि स्टील प्लांट शहर के बीच में चल रहा है। तो इसीलिए देयर हैज टू बी सम, अनलाइक कलिंगानगर और अंगुल जहाँ स्टील प्लांट शहर से बहुत दूर है, तो उधर में इट इज़ अ डिफरेंट सिचुएशन। तो हियर हम लोग जो भी शहर के लिए सही है वो करने के लिए तैयार है, एंड आई थिंक वी आर हैप्पी टू डू इट। वी हैव बीन डूइंग इट ऑल द इयर्स एंड वी विल कंटिन्यू। लेकिन अगले 5 सालों में ही आंसर भी है ना, फिर भी हम लोग जमशेदपुर में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। ग्रोथ सब उड़ीसा में हो रहा है, पर हम क्योंकि हम लोग का 100 साल से हम इधर है। सी स्टील प्लांट में और कोई स्टील प्लांट नहीं है जो 1800 एकड़ में 11 मिलियन टन का प्रोडक्शन हो रहा है, तो इससे ज़्यादा प्रोडक्ट है। तो इसीलिए हम लोग डाउनस्ट्रीम पे, जहाँ लैंड है, जहाँ ISWP जेमको हो या गमारिया में हो, हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। जहाँ हम लोग का लैंड है उधर इन्वेस्ट करके हम लोग प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। डाउन हुआ है ऑलमोस्ट 3000 करोड़ से ज़्यादा हो रहा है इन्वेस्टमेंट। टिन प्लेट में 1800 करोड़, 1700 जो हुआ और तो 3-4 हज़ार करोड़ नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में हो रहा है। ऐसे उसके अलावा ऑफकोर्स जमशेदपुर में जो प्लान चलाने के लिए हम लोग का हर साल इन्वेस्टमेंट होता रहता है। माइंस में भी है, झारखंड में माइंस में भी हम लोग का इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज एक्सपेंशन माइंस में भी रहता है। ऐसे टाटा स्टील पूरे ग्रुप का जो है इन्वेस्टमेंट का अभी क्या प्लान है नए साल का बात करें तो हम लोग बोला है कि टाटा स्टील हर साल कुल मिला के ऑलमोस्ट ग्रोथ के लिए 10,000 करोड़ हर साल का इन्वेस्टमेंट का प्लान बन रहा है, क्योंकि इंडिया का डिमांड बढ़ रहा है। तो टाटा स्टील को भी प्रोडक्शन बढ़ाना है, नहीं तो हम लोग का मार्केट शेयर घटेगा। तो इसीलिए हम लोग वो तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जहाँ भी जगह है, जहाँ भी अवेलेबिलिटी है लैंड का, उधर हम लोग इन्वेस्ट करके ग्रो कर रहे हैं। झारखंड में जैसे चाणक्य जी ने बोला, डाउनस्ट्रीम में ग्रोथ है और अपस्ट्रीम रॉ मटेरियल में बहुत ग्रोथ है। जमशेदपुर में जितना भी हम लोग कर पा रहे हैं कर रहे हैं। दूसरा बात जो आप बोल रहा था चाइना का और ग्लोबल, उसके पहले भी आप कुछ पूछे थे ना, हम बोले कि 30 ग्रुप कितना तो एक चीज़ है कि 2030 में टाटा स्टील का जो माइंस है वो ऑप्शन में जाएगा। ठीक है, तो तब तक हम लोग का कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि 2030 के बाद टाटा स्टील को रॉ मटेरियल मार्केट प्राइस में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि जो भी फैसिलिटीज़ हमारा हो, जमशेदपुर में हो या कलिंगानगर में हो या अंगुल में हो, कॉम्पिटिटिव रहना चाहिए। क्योंकि ये नहीं कि
मार्केट प्राइस में रॉ मटेरियल लेने से प्रॉफिटेबल नहीं है। तो उसी का हम लोग बहुत प्रोग्राम चल रहा है जमशेदपुर में और बाकी एरिया में, वो करते रहेंगे कॉम्पिटिटिव। यूरोप में जो जहाँ हम लोग का फैसिलिटी है उधर हम लोग को गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिल रहा है और उधर का रेगुलेटरी एनवायरनमेंट भी ऐसा है कि जो ट्रांजिशन करना है लो CO2 प्रोडक्शन रूट के लिए वो हम लोग कर रहे हैं उधर। इधर में इंडिया में अभी भी लॉज आर बीइंग फ्रेम्ड, ये उधर में कार्बन प्राइसिंग है, इधर कार्बन प्राइसिंग नहीं है। तो वो सब अभी गवर्नमेंट के साथ बात चल रहा है, क्योंकि इधर भी गवर्नमेंट उस पर सोच कर रहा है कि कैसे इंडिया को अभी नेट ज़ीरो 2070 तक लेके जाना है, तो क्या क्या नियम आना चाहिए करेंगे। तो इंडिया में वैसे ही टाटा स्टील का जमशेदपुर प्लांट CO2 में सबसे बेस्ट प्लांट है इंडिया में, 2.11 लेवल पे CO2 है। सो ये प्रोसेस रूट का स्टील प्लांट्स में ये बेस्ट है। तो वैसे ही हम इंडिया में बेंचमार्क है, पर हम लोग को और सुधार करना है। रिकवरी उतना नहीं हुआ जितना लोग सोच रहे हैं।